आज का जो हमारा टाइटल है वो है मॉडल इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ, आज हम लोग मॉडल सीखेंगे नहीं, आज मैं आपका मॉडल वर्ब का टेस्ट लेने वाला। कर्म करो बट फल की चिंता मत करो। बहुत समय क्या होता है, वी प्रैक्टिस एंड वी सी वी आर नॉट स्पीकिंग, हम बात नहीं कर पाते हैं। एवरी डे वी आर प्रैक्टिसिंग एंड वी आर इवेल्युएटिंग, यार मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू स्पीक। स्टॉप इवेल्युएटिंग योरसेल्फ, you don't need to prove anybody, please understand this, you have to improve yourself। दोस्तों जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, I am Subhash Kartik and I help people to speak English fluently, correctly and impressively। I'm going to ask you 15 questions, please be ready with your copy and pen। each question has 1 mark और मैं देखना चाहूंगा कि आपको 15 में से कितने मिलते हैं। So are you ready? Let's go for the first question. So here comes your first questions with options. My wife has never driven a cycle in her life, but she dash already drive the car. You have 2 options, may and can. और आपके पास सिर्फ 15 सेकेंड है इस क्वेश्चंस के आंसर के लिए। And your time starts now. And the right answer is can. My wife has never driven a cycle in her life, but she can already drive the car. The next question is dash. You open the door, please. Dash. You open the door, please. And your time starts now. And the right answer is could. Could is the right answer. Could you open the door, please? Let's go for question number 3. Perhaps Raj dash impressed the interviewer today. I hope कि Raj interviewer को impress कर सके। क्या होगा? Your time starts now. And the right answer is may. May is the right answer. Perhaps Raj may impress the interviewer today. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे may आएगा because you never know कि क्या होगा। हो सकता है कि राज impress कर पाए, हो सकता है कि राज impress ना कर पाए। There is a 50-50 chance और already मैंने बताया था कि जब भी 50% chances हो तो वहाँ पे हमेशा may होगा। दोस्तों अगर आपने हमारा modal verbs के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, वहाँ पे modal verb को और डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द स्टूडेंट्स डैश listen to the coaches. All the students dash listen to the coaches. May listen to the coaches, must listen to the coaches. Think about the right answer. Your time starts now. And the right answer is all the students must listen to the coaches. Question number 5. You sound depressed. I think you dash go to the psychiatrist. तुम बहुत depressed दिख रहे हो। मुझे लगता है कि dash you go to psychiatrist. And the right answer is you should go to the
psychiatrist. Next question. I must be at my gym at 6 o'clock every day. So I dash wake up at 4 o'clock. Choose the correct answer. I have to wake up at 4 o'clock or I might wake up at 4 o'clock. And your time starts now. And the right answer is I have to wake up at 4 o'clock. I have to wake up at 4 o'clock. यहाँ आप सोचोगे ये have to जो वर्ब है क्या ये modal verbs है? जी हाँ दोस्तों, ये have और to ये अलग अलग वर्ब है, लेकिन जब भी आप इसे सेंटेंस में as a have to एक सिंगल modal verb के हिसाब से यूज करते हो तो yes ये एक modal verb बन जाता है. She dash open the door. It's stuck. I guess ये सेंटेंस तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा. So please write your answer. And the right answer is can't. She can't open the door. It's stuck. जी हाँ, वो दरवाजे को ओपन या खोल नहीं पा रही है क्योंकि कहीं पे वो दरवाजा फंस गया है. Dash you spare your pen please? Should you spare your pen please? Could you spare your pen please? क्या लगता है क्या होगा आंसर? Your time starts now. And the right answer is could. Could you spare your pen please? Could you spare your pen please? काफी अच्छा वर्ब है ये spare. Spare मतलब कोई चीज को आप कुछ देर के लिए लेते हो, उसे spare बोलते हैं. We have to help the needy people or we ought to help the needy people. Your time starts now. And the right answer is we ought to help the needy people. दोस्तों इस बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था. आप have to तब बोलोगे जब आपको करना चाहिए और ought to भी आप तभी बोलोगे जब आपको करनी तो चाहिए, लेकिन जो चीज आपको करनी चाहिए वो एक नॉर्मल चीज नहीं है, वो काफी मोरल बात है, काफी महान काम करने वाले हो आप. बहुत लोग बोलते हैं कि सर अगर मैं ought to नहीं करके अगर मैं have to करता तो क्या सेंटेंस गलत हो जाता? नहीं, लेकिन एक होता है सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बोलना और एक होता है सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट के साथ साथ अप्रोप्रिएटली बोलना. सो इस सेंटेंस में हैव टू भले ही एक सही आंसर होगा आपके लिए, लेकिन ought to आपके लिए बेहतर ऑप्शन. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10. आई डैश see a doctor because I felt very sick. I have to see a doctor because I felt sick और I had to शायद जाना पड़ा था. had मतलब past. I had to see a doctor because I felt sick. And your time starts now. And the right answer is had to, because मैं past के बारे में बात कर रहा हूं तो मेरी आंसर होगी I had to see a doctor because I felt very sick. They live in a very big house. They dash be rich. They live in a very big house. They dash be rich. And your options are must and may. And your time starts now.
And the correct answer is must. They live in a very big house. They must be rich. They must be rich. Dash. All your wishes come true. हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी कि मैं विश करता हूँ कि जो भी तुम चाहो वो तुमको मिल जाए, right? And your both options are may all your wishes come true. Can all your wishes come true? क्या लगता है, क्या सही आंसर है? Your time starts now. And the right answer is may all your wishes come true. May all your wishes come true. एक बात बता दूं, आपके रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें, बिकॉज हर दिन मैं वहां पे काफी छोटे छोटे वीडियो लेसन्स देता हूं, मैं अपलोड करता हूं, तो जरूर जाइए और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को आज ही फॉलो करें. Let's go for the number 13. She dash have called him as he has been waiting for a long time now. अच्छे से सेंटेंस को समझे. And the right answer is should. She should have called him as he has been waiting for her for a long time now. Now let's go for our 14th question. Sir, what dash you like to have? Sir, आप क्या लेना पसंद करोगे? क्या लगता है आपको आंसर? And the right answer is, sir, what would you like to have? I dash have swum across the river, but my mother didn't allow me. मैं इस नदी को पार कर लेता तैर कर, बट मेरे मम्मी ने मुझे अलाउ नहीं किया, मेरे मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया. क्या लगता है कौन सा वर्ब आएगा? And the right answer is could. I could have swum across the river. So दोस्तों, अपने आंसर्स को अच्छे से देखिए, अच्छे से चेक कर लीजिए कितने आंसर सही हैं, कितने आंसर गलत हैं, और हर एक सही आंसर के लिए you give yourself 1 marks. And please add all the positive answers and tell me what is your score in the comment section. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना मार्क्स आपको मिला है. दोस्तों, जो भी करो अपने बलबूते पे करो. अगर 1 मार्क्स भी आपको मिले तो आपके बलबूते का होना चाहिए. सो फ्रेंड्स, एज यू आर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, वी ऑल्सो वांट टू इम्प्रूव आवर चैनल, एंड टू इम्प्रूव आवर चैनल योर सपोर्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू पर्सनली like our channel, and your coach Subhash. Thank you very much.